Lights, camera, action. If I sound sick, that's because I am. Not that you care, but that is also the reason कि मैंने last week video नहीं डाली. So if you can just pretend in the comments like, oh, we missed you so much last week, we were waiting for your video, I'll be really grateful. So if you've come here from my Instagram, which you probably would have, so you must have seen my story about the raspberry jelly where I said it's a major hint for my next video. I was talking about the current phenomenon, the Summer I Turned Pretty season 3. If you understood what this was, we can be friends. Dreiglisser bitte. I've completely got the German accent wrong. This is totally not how Germans sound. Ira, do better. This is the closest outfit I have to what Belly wears in the show. And we have the hoops and the orange top thingy. I know वो इस outfit के साथ blue eyeshadow लगाती है, but I have hooded eyes. And अगर मैं eyeshadow लगाने जाऊँ किसी भी color का, तो I look like a dead raccoon. So that is not going to happen. We are just gonna say this looks okay, I look similar, and we are gonna roll with it because that is how we do things here. Disclaimer, I haven't really watched any of the show after the first season because I don't really like it. So anything that I know about the third season has been against my will. Instagram has force fed me every single update about every single episode so far. तो अभी भुगतो. तो मैं पहले ही आपको वार्निंग देना चाहती हूँ. I have no idea how the rest of the video is going to go. I'm just going to be around here spewing nonsense about things I don't know based on my half-baked knowledge of the second and third seasons. So if you want to leave, if you want to hit the back button, sounds so wrong. If you want to exit the video, आई थिंक दिस इज योर चांस टू डू दैट. अब इसके बाद फिर आके मुझे कोई नहीं बोलेगा तो हम क्या ही देख रहे हैं, हमने क्यों देखा, सच अ वेस्ट ऑफ टाइम. देन इट्स नॉट ऑन मी, इट्स ऑन यू. For those of you who don't know anything about the Summer Turned Pretty, even though it's highly improbable कि ऐसा होगा, तो I'll just quickly tell you. आपने मेरी ब्रदर की दुल्हन देखी है, आपने कुछ कुछ होता है देखी है, दोनों को मिक्स करवा दीजिए and make it 10 times worse, and what you get is the Summer I Turned Pretty. That's exactly it. Just that. So Belly, Conrad, and Jeremiah are like childhood friends and they have grown up together because Jeremiah और Conrad भाई है, Belly and Steven siblings है, दोनों की माएँ best friends थी. Belly को जन्मों जन्मों का प्यार है Conrad के साथ. Childhood crush into 100x into infinity side. See, I know some things about the show even though I haven't watched it. Anywho, तो एक समर आता है जब बेली आई थिंक 16 या 18 साल की होती है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट वो सडनली प्रिटी हो जाती है. आपको अंजलि का ग्लो अप याद है? कुछ कुछ होता है मैं कि जब वो बाल बढ़ाती है एंड साड़ी पहनती है तो अचानक से बहुत सुंदर हो जाती है. बेली का भी सेम ही है, वो चश्मे निकाल देती है और ब्रेसेस निकाल देती है और वो दैट इज हर समर दैट आई टर्न प्रिटी. वो पहले से ही सुंदर ही थी बाय द वे. ऐसा नहीं था कि वो पहले अगली थी और अचानक से ग्लो अप हो कि अरे व्हाट यू गेट इज अ प्रिंसेस हुआ है उसका. नहीं, वो सुंदर ही थी पहले से. लाइक एनी teenage movie, her glow up is basically her taking off her glasses and braces. That is their definition of turning pretty. तो शो का बेसिकली जिस्ट ही यही है कि वो अभी जो सुंदर हो गई है तो उसके लाइफ में बहुत सारे बॉय प्रॉब्लम्स आ गए हैं. वो चाहती है कॉनराड को बट उसको डेट नहीं कर पाती है. बट वो करते हैं, लाइक दे डेट इन द सेकेंड सीजन. तो क्या पॉइंट है इस टाइटल का, मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि फर्स्ट सीजन इज चलो फाइन. प्रिटी होने का इससे कुछ था नहीं वैसे रिलेशन, नाउ दैट यू थिंक अबाउट इट ऑनेस्टली. बट एनीवे, she does date Conrad, I think, in the second season, but then they break up and then
Belly starts dating his brother Jeremiah. Now they have been dating for 4 years. और इन 4 सालों में जेरेमाया भैया ने बेली दीदी के ऊपर 2 बार चीट किया है, and she knows about it, and Belly Didi is okay with it, I guess. And in the 3rd season, the two of them are gonna get married. And Belly is marrying Jeremiah by giving up her lifelong dream of going to Paris. For what, I don't know, but she wants to go to Paris, and she's going to Paris, but अभी शादी हो रही है, तो Jeremiah is like, I need you close by me, तो नहीं जा रही थी वो अभी. And Jeremiah is apparently in some 20K debt or something. और वो रिंग पता है जेली क्या बोल रही हूँ, और वो रिंग पता है बेली को क्या दे रहा है. मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ. ये दिस इज हर रिंग. अच्छी लग रही है आपको? दिख रही है? उसकी भी नहीं दिखती. And like after a very few cutesy romantic moments between Belly and Conrad, Belly realizes her true love for Conrad. Then Jeremiah calls off the wedding with Belly, and then she goes to Paris. अभी एक एपिसोड, द सीरीज फिनाले एपिसोड बचा है जो अभी इस वीक आएगा, एंड कॉनराड इज आई थिंक गोइंग टू पेरिस टू गेट हिज लव बैक. तब बेसिकली एनी 3 hours बॉलीवुड मूवी उन्होंने 3 सीजन तक खींची है, बट सेम ही है. उससे अच्छा मेरे ब्रदर की दुल्हन या कुछ कुछ होता है देख लो. वो अच्छी तो है, खत्म भी हो जाती है मस्त 3 घंटे में. By that, I mean anyone who shits on Bollywood and then goes to watch The Summer I Turned Pretty thinking, oh, it's so much better, it's so romantic, and it's so cute, needs a reality check, because Bollywood has been doing these things for years and has been doing that far, far better than The Summer I Turned Pretty. So ये जो अपना elitist है ना कि no, I तो only watch English and Hollywood web series, ये अपने पास रखो, please. No one gets to shit on Bollywood and then gets to watch and appreciate The Summer I Turned Pretty. You don't get to do that. You don't get to do that. You don't. I am a sucker for love triangles, okay? Love triangles are extremely fun to watch. It's like the will they, won't they dynamic and the awkward, cute moments. They're actually fun to watch. But उसके लिए characters भी अच्छे होने चाहिए. In The Summer I Turned Pretty, every single character is insufferable. My bar of getting entertained is quite low. मुझे entertain करना इतना difficult नहीं है. So if even I am saying कि ये series अच्छी नहीं है, तो it's probably not that great. I think a lot of people are going to come at me for this and going to be like, तुमको क्या पता अच्छी चीजें क्या है? Who gave you the right to say it? I gave it to myself, honey. फर्स्ट सीजन भी मैंने बहुत ऐसे देखते हैं, यू नो, लाइक आई गेव इन टू द हाइप एंड बी लाइक, ओ उतने लोग देख रहे हैं तो देखते करके मैंने खत्म किया. बट आफ्टर दैट आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर लविंग इट सो मच, एंड आई डिडंट लाइक इट. मैं स्टार्टिंग में आई वाज टीम जेरेमाया, बट आफ्टर अ पॉइंट ना मैं टीम जेरेमाया रही, ना मैं टीम कॉनराड बनी, ना मैं टीम बेली हूँ, मैं टीम एंटी बेली हूँ. मुझे वो अच्छी नहीं लगती है वो लड़की. मतलब वी हैव ऑल बीन इन प्लेसेस ऑफ एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड स्टूपिड एक्शंस. शी इज ऑल्सो यंग एंड दैट्स फाइन. But the one thing that you are always clear about is that you like Conrad. So stick to it, na. Then why are you dating other people and ruining their lives? You like Conrad, then keep at it. मैं तो कॉनरेड को ही बनाऊंगी अपना. जाएगा तू जहां, आऊंगा मैं वहां, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं. ड्राई ग्लेसर. Random films have more depth than Belly's childhood crush. Now, even now that she's in Paris, she's with some other guy. Like, you know you like Conrad, so be with him, bro. What is wrong with you? Like, if I have a crush on someone, I would want to pursue them, ना. मैं किसी और को क्यों डेट करूंगी unless मेरे को मूव ऑन करना ही है करके. But then you break up with those guys for Conrad.
and you're not even with Conrad. तो पॉइंट क्या है? इधर कॉनरेड के साथ रहे वरना किसी और के साथ रहे, बट या अकेली रहे, बट स्टिक टू व्हाट यू वांट. व्हाट इज गोइंग ऑन? मैं क्यों देखूं ये? The only character in the entire series that I actually liked was this guy that Belly dated in the first season. His name was Cameron. I liked Cameron. He's the only guy I liked. I'm Team Cameron. तेरा भला हो जिंदगी में, कैमरॉन का अच्छा, तू बेली से दूर रहे, ऐसा ही मुझे अभी लगता है. यू नो, क्यूट गाय, स्वीट गाय, नाइस गाय, हैंडसम गाय. गो टीम कैमरॉन. ओके, टीम कैमरॉन जिंदाबाद. मैंने ये रील बनानी चाहिए. नो, आर यू टीम कॉनराड, आर यू टीम जेरेमाया? आई एम टीम कैमरॉन, but I identify more as team anti-belly. No hate to any of the actors, by the way. They're extremely amazing and they are great. I just don't like the characters that they portray. I don't. And the one thing I really love about Love Triangles is, like, till the end, it's still a little unclear कि ये किसके साथ जाएगा, the main character, you know. But इधर it's quite obvious. And अभी going to the season finale, it's तो मतलब more than obvious कि you know Conrad and Belly are going to end up together. अगर उन्होंने कुछ अलग ही दिखाया कि Conrad ऐसे Belly के सामने गया, it's like, nah bro, I'm worth more यार, मेरे को नहीं रहना Belly के साथ. तो मैं मानू कुछ तो अनप्रेडिक्टेबल हुआ है सीजन फिनाले. सीजन फिनाले क्या बोलूं, सीरीज फिनाले, क्या ही बोल सकते हैं. और नहीं अच्छी लगी मुझे सीरीज ये. I'm pretty sure people are going to either agree with me very strongly or disagree with me very much, like vehemently. Let me know what you think. Let me know what other predictions that you have about the series finale. They could range from like Belly realizing that she actually doesn't like Conrad to like an alien invasion destroying the world. I don't know. At this point, I'm standing true to what I said in the beginning. I'm just spewing nonsense. I'm making zero sense. Yeah, let me know what you think in the comments. Let me even know what you're watching these days. Let me know what you think about the Summer I Turned Pretty, about the series finale. One thing I always forgot. Always, always, second video and always. Wow. Very smart era. Anyway, I forgot to tell you in the last video, but you guys did that anyway. So thank you so much. But please subscribe to my channel. Like this video, share this with your friends. एंड यस, अगर आप वो खतरों के खिलाड़ी हो जो अभी तक टिके हुए हो, तो आई लाइक यू, आई अप्रिशिएट यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू. बट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.